Good morning, guys. Online students. Okay. So last class we were talking about the consequences of the establishment of Turkish rule. We had talked about the political and military consequences. ये दोनों हो चुके थे. Now we have to talk about the economic and socio-cultural consequences. सबसे पहले economic consequences. Now one major development was the introduction of new technology in various fields, including manufacturing as well as agriculture. For example, in the field of textile manufacturing, improvements were made to a number of processes involved in cotton textile manufacturing. For example, better ginning technique was introduced. Okay? Ginning is the process of removing the cotton seed from the boll of cotton. So, उसमें improvements किए गए. Then improvements were also made to the process of carding. Carding refers to the process of beating the cotton with the objective of connecting the shorter fibers into longer fibers, right? So that it is easier to spin. Similarly, better spinning technique was introduced so that it is easier and more efficient to create cotton yarn. Improvements were also made to the weaving process. New kind of looms were introduced. And finally, the dyeing and printing of cloth was also improved with the introduction of new techniques and technology. So, textile manufacturing में ये नया technology introduce किया गया. Further, paper manufacturing was introduced to India. The technology of manufacturing paper had initially been invented by the Chinese. The Arabs had learnt it from the Chinese, they had brought it to the Islamic world, and the Turks brought it from Central Asia to India finally. Similarly, better navigation technology was made available in India in the form of the magnetic compass, again a Chinese invention introduced to the Islamic world by the Arabs, brought to India by the Turks. Gunpowder also was introduced to India during this period only. However, it was not used for mining or warfare activities. It was used rather for making firecrackers, for pyrotechnics. Better irrigation methods were introduced with the introduction of new instruments for irrigation, such as the sakia and rahat. Because of this, agricultural productivity improved and more land was brought under cultivation. New construction techniques
and materials were also introduced, resulting in both a cosmetic as well as quantitative change in the amount of public buildings that were constructed during the Sultanate period. ठीक है, तो बहुत सारा नया टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया गया. What was the result of the introduction of all this new technology? Rise in crafts production. Because of improvements in agriculture, there was greater agricultural surplus, and this larger agricultural surplus led to a higher demand, and this demand was fulfilled by further increasing crafts production. Therefore, we can see that a revival of the market was taking place. Disposable income was increasing, craft production was rising, and demand was on the rise. As a result, there was also a revival of urbanization. And to promote all these processes, the Turks also undertook some further efforts. जैसे कि the end of feudalism had a liberating effect on the economy. क्या हुआ इसकी वजह से? First of all, the barriers to trade and manufacturing imposed by feudal institutions, they were all brought down, right? So trade and manufacturing was free to grow. Feudal society in India or anywhere in the world by nature egalitarian or unequal. Unequal society होता है. There are artificial restrictions on movement, on occupation, right? Now all those restrictions were also lifted. So this also liberalized the labor market, right? And as the labor market was liberalized, labor was now free to pursue any occupation of their choice. और ज्यादातर फ्रीड लेबर क्या करेगा? क्राफ्ट प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा. Where are these crafts going to be pursued primarily? In urban locations, in cities, right? Now further, the Turks also destroyed the, or you can say also unlocked the immobile wealth hoarded in forts and temples, right? तो अभी तक जो wealth in the form of precious metals टेम्पल्स के बेसमेंट्स में या फिर किलों के तहखानों में रखा जाता था, that was now mobilized and this entered the market.
this also had a facilitative effect on all these secondary economic activities. The Turkish sultans themselves contributed to the growth of craft production and trade. They provided patronage and protection to traders. They created the necessary infrastructure to promote trade, such as the maintenance of state highways, which were patrolled by royal troops, and inns or sarais. ठीक है. The ICTA system also contributed to the growth of the secondary economic activities and urbanization. कैसे? These ICTAs, what were they? They were administrative and military centers located in the peripheral regions of the Delhi Sultanate. And the establishment of the administrative bureaucracy and the military hierarchy in these far-flung regions created the demand for manufactured goods, ranging from textile products to leather goods to weapons, arms and equipments, steel works, iron works, etc. सबका यहाँ पे डिमांड रेज हुआ. ठीक है. Now these ICTAs, or at least some of them, were also connected through various trade routes and also emerged not only as administrative and military centers but also as trading centers. Since the ICTA was also a military center, it was very useful in pacifying the surrounding area. तो वहां पे पीस मेंटेन करने में, ऑर्डर मेंटेन करने में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में इन ICTAs का एक बहुत मेजर रोल था. एंड ऑल दीज थिंग्स वर कंड्यूसिव टू द ग्रोथ ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, क्राफ्ट प्रोडक्शन एटसेट्रा. ठीक है. फर्दर, the establishment of the Delhi Sultanate also resulted in political unification of a large portion of North India at a level that had not been visible for the past 500 years or even more. Okay? The result was that with the political unification also came economic unification. All the trade barriers that existed between the small kingdoms before the Turks, they all disappeared. A common customs regime was followed, internal taxes were removed, and all of this naturally promoted trade, commerce and urbanization. Another important contribution of the Turks to the field of economy was the monetary unification. Of North India. मॉनेटरी यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? इसके पहले कई सारे छोटे छोटे राजपूत किंगडम्स थे, हर जगह पे अपना अपना सिक्का चलता था. अब पूरे इलाके में एक सिक्का चलेगा, सबको आसानी होगी, स्पेशली ट्रेडर्स को, राइट.
They would not have to go to money changers time and time again. तो जो added cost होता है, time होता है, वो बच जाएगा, and this is going to facilitate trade and commerce. The Turks also brought India into closer contact with Central and Western Asia. So they reinvigorated India's external trade. इनिशियली जब टर्क्स नए नए यहाँ पे आए थे इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग अभी बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश नहीं हुआ था, देन द डायरेक्शन ऑफ दिस ट्रेड वाज प्राइमरीली bringing goods from Western and Central Asia into India, because the Turks and the other members of the ruling class were habituated to using goods of those regions. Once the manufacturing base of India was developed, since India was a surplus nation, has always been a surplus nation, the direction of trade, the balance of trade shifted. Now it was in favor of India. India began exporting large quantities of manufactured goods to the Western world, to Central and Western Asia. ठीक है, तो ये डेवलपमेंट्स होंगे इकोनॉमी में. इज दिस मच क्लियर? लिख लेते हैं इसको जल्दी से. गिव द हेडिंग इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस. इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस. Write down. The establishment of Turkish rule. The establishment of Turkish rule had a profound effect. Had a profound effect on the Indian economy. On the Indian economy. Full stop. It contributed to the reinvigoration of trade, crafts production and agriculture. Full stop. Next point. The establishment of Turkish rule is therefore associated with India's third urbanization. Full stop. The Turks contributed to this development in the following manner. Number one, new technology. हाँ, इसी में ही number one, new technology. Write down. Contemporary literature such as the Khazain ul Futu
written by Amir Khusro. And the Miftah-ul-Fuzala, written by Maulana Daud. Miftah-ul-Fuzala by Maulana Daud. I have described several new techniques and technologies which contributed to rapid growth. Write down sub point. The textile industry was revolutionized with the introduction of ABCD करके लिख लो. A, superior ginning technique. Ginning पता है ना क्या होता है? It is the process of removing the cotton seed from the boll of cotton. तो कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का सबसे पहला स्टेज होता है. एज सुन एज द कॉटन इज पिक्ड तो उसमें से सीड को हटाना होता है, अदरवाइज इट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड. ठीक है. बी, द पर्शियन कार्डिंग बो जिसको नद्दाफ बोलते थे. ठीक है. कार्डिंग बो, BOW, बो, नद्दाफ. So you may have seen images of a worker beating the raw cotton with a bow-like instrument, right? तो उसमें एक धागा लगा होता है और लकड़ी का बना होता है, उसको ऐसे ऐसे चला करके बीट करते हैं. पर्पस क्या होता है? इंडिया में जो कॉटन होता है दैट इज शॉर्ट स्टेपल कॉटन. अब उसके जो इंडिविजुअल फाइबर्स होते हैं दे आर क्वाइट शॉर्ट एंड दिस इज नॉट वेरी सूटेबल फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग. उसके लिए थोड़े लंबे फाइबर्स चाहिए होते हैं. बाय बीटिंग द रॉ कॉटन we intertwine the shorter fibers and to make longer fibers, so that is easier to spin later on. ठीक है. तो Persian carding bow, नद्दाफ. C, चरखा replaced the spindle and whirl. तो चरखा तो पता होगा, राइट? अब initially the charkha did not have a handle, so it was not as efficient, and later on charkha with handle was also introduced. So write down in the same C wala point, full stop. Later a handle was introduced to the charkha.
नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? वीविंग, राइट? तो राइट डाउन डी, द पिट or treadle loom replaced the traditional hand loom. Replaced the traditional hand loom. What is the difference? Traditional hand loom में only hands of the workers are in use. ठीक है? In the pit or treadle loom, the worker can use both his hands as well as feet for the weaving process. ठीक है? So it is much faster, much more efficient. And E लिखो. E, block printing. Block printing was imported from Central Asia. ठीक है? नेक्स्ट मेन पॉइंट लिखो इसी में, टेक्सटाइल के अंदर ही. हाँ, जो टेक्सटाइल वाला लिखा है ना, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, उसके अंदर ही नेक्स्ट मेन पॉइंट. ये जो ABCD ये वाला है वो खत्म हो गया. अब नेक्स्ट वाला लिखो. विद दिस India gradually regained its position as the leading cotton textile manufacturer in the world. Full stop. Next point. हाँ, उसी में cotton textiles continued to remain India's most important export till the Industrial Revolution in Britain. Till the Industrial Revolution in Britain. Full stop. Next sub point or next point. Cotton manufacturing centers stretched from Lahore up to Bengal. Next point. In fact, the spinning and weaving of cotton became a household activity. So much so that it became inherently linked with the Indian identity. तो देखो, large scale cotton manufacturing on an organized level was taking place in the cities. ठीक है? However,
The farmers also in their individual households during their free time to supplement their income क्या कर रहे थे, यही कॉटन यार्न को मैन्युफैक्चर कर रहे थे, कॉटन को स्पिन कर रहे थे. Some cloth was also being weaved to fulfill their domestic needs and local needs को fulfill करने के लिए local level पे villages में manufacturing चल रहा था. And this took place right from the 13th century up to the mid 18th century. mid 18th century के बाद से जब ब्रिटेन ने इंडस्ट्रियल कॉटन को फ्लड कर दिया इंडिया में, तब से ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हुआ. अब इंडिपेंडेंस के बाद धीरे 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 उसका रिवाइवल करने की कोशिश करी जा रही है. ठीक है, सो एक तो ये हो गया टेक्सटाइल. नेक्स्ट वाला लिखो पेपर मैन्युफैक्चरिंग. अभी जैसे टेक्सटाइल लिखा था ना, वैसे ही अगला वाला पेपर. नई टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है. पहले टेक्सटाइल, दूसरा पेपर मैन्युफैक्चरिंग. राइट डाउन. Before the establishment of Turkish rule, paper had to be imported making it expensive and rare. Expensive and rare. Full stop. Next point. With the introduction of paper manufacturing technology, to India from Central Asia, it became so abundant that according to Amir Khusro, even the sweet sellers of Delhi were using it as packaging material. Acha, this abundance of paper, is it going to create any other effects on the society, on the economy? कुछ और होगा इसकी वजह से? क्या होगा? कुछ नए प्रोफेशंस अब काफी ज्यादा बढ़ने लग जाएंगे. जैसे कि किस तरह के प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ेगी? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग वो तो छोड़ दो कि मैन्युफैक्चरिंग में वो लकड़ी काटने वाले का, ट्रांसपोर्ट करने वाले का, पेपर को पल्प बनाने वाले का, उसको प्रेस करने वाले का, उसका तो चलो डिमांड बढ़ेगा ही. जो उसके डाउन स्ट्रीम एक्टिविटीज हैं, पेपर कहाँ पे यूज होता है? न्यूज़पेपर तो उस समय नहीं था, लेकिन यू आर गोइंग इन द करेक्ट डायरेक्शन. अरे लिखाई पढ़ाई के लिए यूज होता है ना. तो अब क्या एक्टिविटीज पॉसिबल हो जाएंगी जो कि पेपर की कमी की वजह से उतनी ज्यादा पॉसिबल नहीं? उस समय प्रिंटिंग प्रेस तो होता नहीं था, देखो. राइट. तो जो बुक्स होती थी वो हाथ से लिखी जाती थी, और क्योंकि पेपर बहुत कीमती होता था तो किताबें बड़ी कीमती होती थी, बहुत रेयर स्पेसिमेंस होते थे. नाउ इट बिकेम पॉसिबल फॉर लार्ज नंबर्स ऑफ कॉपीज ऑफ द सेम बुक्स टू बी मेड दैट दे कुड बी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है. तो सबसे पहले डिमांड इंक्रीज होगी उन लोगों की जिनकी राइटिंग सुंदर है, जिनको लिखना आता है. राइट. तो स्क्राइब्स एंड कैलीग्राफर्स, इनकी तादाद बढ़ेगी. राइट.
सेकेंडली, अब किताब का आपने सिंगल शीट्स ऑफ पेपर पे पूरी किताब लिख दी, कॉपी कर दी, राइट, बट उसको बाइंड करने के लिए एक बुक बाइंडर चाहिए होगा, राइट, तो बुक बाइंडिंग इंडस्ट्री का भी बहुत ग्रोथ होगा इसके बाद से, राइट। फिर उसके बाद the Turks discovered that Indians have their own rich tradition of literature, जिसमें कई सारे hidden pearls of wisdom हैं, तो it is best if we can translate them। तो अब ट्रांसलेशन का भी बहुत जोर से खुमार चढ़ा, तो कई सारे ट्रांसलेटर्स की जरूरत पड़ने लग गई। अब ट्रांसलेटर्स को पहले संस्कृत सीखनी पड़ेगी, प्राकृत सीखनी पड़ेगी, तो उसके लिए कौन इमर्ज होगा? कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि इस ट्रांसलेशन को फैसिलिटेट कर सकते हैं। फर्दर, with the proliferation of paper and books, the impartation of education became much more widespread। पहले education was the preserve of only the richest of the rich, ठीक है, now it became more widespread। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबको accessible हो गया, but more widespread as compared to earlier, ठीक है। तो ये सारे डाउनस्ट्रीम चेंजेस होंगे बिकॉज ऑफ द अबंडेंस ऑफ पेपर, इंट्रोडक्शन ऑफ पेपर मैन्युफैक्चरिंग। लिख लें इसको, राइट डाउन। with this rare books were copied and there was a proliferation of literature। Next point, many Indian works were also translated Next point, record keeping for trade and administrative activities became the norm। Next point, as such the number of scribes, accountants, bookbinders, scholars and teachers increased considerably। Full stop। Next point, with the higher availability of paper, comma, the access to education also improved। Next point, the spread of paper manufacturing to regional centers also contributed to the growth of regional literature। Full stop। Next point, therefore the introduction of paper manufacturing
had a profound impact on Indian society, economy, and culture. ठीक है, तो हमने टेक्सटाइल देख लिया है, पेपर देख लिया है. थर्ड, नेविगेशन. Now, in this field, the most significant development improvement was the introduction of an instrument known as the कुतुबनामा. ठीक है. Now, कुतुब is an Arabic word. इसका मतलब होता है पोल, जैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वो वाला पोल. ठीक है. हिंदी में बोलोगे तो ध्रुव बोल सकते हो, राइट. कुतुबनामा क्या होगा फिर, जो कि ये पॉइंट करे कि नॉर्थ पोल कहां पे है, साउथ पोल कहां पे है. क्या बोलते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को, कंपस, राइट. कंपस किस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, मैग्नेटिक. तो कुतुबनामा वाज द मैग्नेटिक कंपस. इट वाज इनिशियली इन्वेंटेड बाय द चाइनीज. तो चाइनीज ने फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ स्टोन्स उनको पहले नोटिस किया, फिर उसके बाद लोड स्टोन टाइप के डिवाइसेस बनाए. तो उसमें होता क्या था कि एक जो मैग्नेटिक स्टोन है उसको किसी स्ट्रिंग से या रस्सी वगैरह से सस्पेंड कर दो, इट इज गोइंग टू अलाइन इटसेल्फ इन अकॉर्डेंस विद द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. अब इसी को उन्होंने मिनिएचराइज किया, रिफाइन किया, एंड देन द अरब्स लर्नड द टेक्निक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दिस. They called it the Qutubnama. Turks learnt it from the Arabs. They brought it to India. Right? लिखो इसको. The Turks introduced the Qutubnama. The Qutubnama. Within bracket, magnetic compass to India. To India. Full stop. फायदा क्या हुआ इसका, it was much more reliable as compared to previous methods of navigation. इसके पहले ज्यादातर सेलर्स, नेविगेटर्स या ट्रैवलर्स किस चीज के ऊपर रिलाई करते थे, पोजीशन ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज, स्टार बेस्ड नेविगेशन करते थे, राइट. राइट डाउन. दिस वाज मच मोर रिलायबल than star based navigation. And what was the result of this? क्या applications हो सकते हैं इसके? Very useful for exploratory activities or trading activities or military activities. Write down. This led to tangible improvements in navigation, in exploration, trade and military operations. In the field of navigation, the Turks had also introduced one other, you can say, specimen to India.
इंडिया में ये पहले से एग्जिस्ट करता था, बट द टर्किश टेक्निक ऑफ कार्टोग्राफी वाज सुपीरियर टू दोज दैट यूज्ड बाय इंडियंस। कार्टोग्राफी क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैप्स, ठीक है। तो टर्किश मैप मेकिंग वाज सुपीरियर टू द इंडियन टेक्निक। राइट डाउन। द टर्क्स also introduced superior cartography resulting in more accurate, detailed and exhaustive maps. More accurate, detailed and exhaustive maps. So stop. Once again, these are going to be of immense economic and strategic importance. Military के लिए भी बहुत काम के होंगे, traders के लिए भी, ठीक है। Write down. They also brought, sorry, these brought immense strategic and economic benefits. Immense strategic and economic benefits. ठीक है। तो टेक्सटाइल, पेपर, navigation. Now number 4, gunpowder. Gunpowder, like all these other things, first invented by the Chinese. It was introduced to India by the Turks with during the 13th century. तो शुरू में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, but it was not used in warfare, nor was it used for blasting the land. माइनिंग एक्टिविटीज के लिए भी यूज नहीं होता था। किस चीज के लिए यूज कर रहे थे ये? पटाखे बनाने के लिए, आतिशबाजी करने के लिए, फॉर पायरोटेक्निक, ठीक है। राइट डाउन। गन पाउडर was brought to India by the Turks. However, during the Sultanate period, it was not used in warfare or mining. It was not used in warfare or mining. Full stop. It was used primarily for pyrotechny. पायरो का मतलब ग्रीक में फायर होता है, ठीक है। पायरोटेक्नी, PYROTECHNY, और पायरोटेक्नी। राइट। तो ये हो गया गन पाउडर। नेक्स्ट कौन सा? नंबर 5। हाँ, नंबर 5 लिखो, इरिगेशन। इरिगेशन। तो इरिगेशन में कुछ नए इरिगेशन मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। वन ऑफ देम वाज नोन एज साकिया, द अदर वन रहट। रहट देखा है कभी गांव में? नहीं। एक चरखा टाइप का होता है, कोल्हू से बंधा होता है, बैल चलता है तो वो इस तरह से घूमता है, दैट इज नोन एज दी रहट। अब उसी में वो कोल्हू वाला सिस्टम हटा दो तो दैट इज नोन एज दी साकिया। तो जो विदाउट द गियर मैकेनिज्म, जो व्हील होता है इरिगेशन व्हील, दैट इज नोन एज दी साकिया। विद द गियर मैकेनिज्म इट इज नोन एज रहट, ठीक है। रहट ऑल्सो नोन एज अर्घट। नाउ दोनों की यूटिलिटी में थोड़ा डिफरेंस होता है।
साकिया कैन बी यूज्ड ओनली वेयर देयर इज फ्लोइंग वाटर, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, तो पानी के फोर्स से ही ये घूमता है, वाटर को लिफ्ट करता है। राहट में एनिमल पावर इज बीइंग यूज्ड, तो इट कैन बी यूज्ड फॉर स्टिल बॉडीज ऑफ वाटर, कोई टैंक हो गया, कोई वेल हो गया, वहां से पानी निकालने के लिए यूज किया जाएगा इसको। ठीक है, तो ये दोनों चीजें इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने। बिफोर दिस इन इंडिया, एटलीस्ट इन पंजाब रीजन, क्या यूज हो रहा था? चरसा एंड ढेकली। चरसा इज योर सिंपल रोप एंड बकेट मैकेनिज्म, तो उसमें या तो पुली हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। और ढेकली इज दी लीवर मैकेनिज्म। तो मान लो ये वेल का माउथ है, एंड यहाँ पे आपने एक फलक्रम टाइप का बना दिया, एंड उसके बाद एक लीवर लगा दिया है, राइट। ओवर हियर देर इज अ बकेट, एंड लीवर को आप ऊपर करेंगे, बकेट नीचे जाएगा, लीवर को नीचे करोगे, बकेट ऊपर आएगा। दिस इज द लीवर मैकेनिज्म, रोप एंड बकेट मैकेनिज्म जैसा। ठीक है, पहले ये यूज होता था, अब ये यूज होगा। अब बताओ कि ज्यादा एफिशिएंट कौन होगा, कौन सा वाला होगा? ये साकिया एंड रहट, बिकॉज लार्जर क्वांटिटीज ऑफ वाटर कुड बी लिफ्टेड मोर एफिशिएंटली in shorter periods of time, so it would be better for irrigational purposes. What is going to be the result of better irrigation? Agricultural productivity can increase on the same piece of land where earlier, because of shortage of water, inferior crops were being cultivated, now superior crops will be cultivated. तो millets की जगह पर wheat, rice, even sugarcane, cotton, maybe it may be possible to cultivate. What is this going to do? सरप्लस इंक्रीज होगा, वैल्यू प्रोडक्शन का इंक्रीज होगा, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द फार्मर इंक्रीज होगा, टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज होगा, बिकॉज ऑफ विच supply is also going to catch up with the demand. So overall the economy is going to grow because of better irrigation techniques. Further, in those areas where because of the shortage of water agriculture wasn't even possible, now because of the use of groundwater it may become possible, because sufficient quantities में अब water available होगा. This is the expansion of agriculture is also going to have the same kinds of results. ठीक है, लिख लो irrigation. The traditional charsa, within brackets you can write rope and bucket mechanism. Rope and bucket mechanism. And close the brackets, and ढेकली, DHENKALI, within brackets lever mechanism, LEVER, were replaced by the Sakya, SAKIYA, within brackets Persian water wheel, close brackets, and rahat slash arghat, within brackets water wheel with gear mechanism. Full stop. Next point. These improvements had a revolutionary effect.
there was a remarkable increase in the productive capacity of land, in the productive capacity of land, full stop. It became possible to cultivate superior crops, generating higher value. It became possible to cultivate superior crops, generating higher value. Generating higher value, comma, increasing disposable income, comma, driving demand, comma, facilitating the commercialization of agriculture, facilitating the commercialization of agriculture, comma, promoting manufacturing, comma, expanding trade and urbanization, trade and urbanization. ठीक है, तो जब आपको पूरा का पूरा बताना है तो इसी तरह से बता सकते हो, कॉमा करके एक एक चीज बता दो, लेकिन हाँ लॉजिकल होना चाहिए, राइट। इट शुड नॉट अपीयर कि जो बाद में बताना चाहिए था वो आपने पहले बता रखा है, जो पहले बताना चाहिए था बाद में बता रखा है। तो अगर इरिगेशन के बाद डायरेक्टली अर्बनाइजेशन लिख दोगे तो समझ में नहीं आएगा, पहले बताना पड़ेगा कि कैसे एग्रीकल्चरल सरप्लस क्रिएट हुआ, फिर उसकी वजह से डिमांड बढ़ी, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा, ट्रेड बढ़ा, फिर अगर आप आते हो अर्बनाइजेशन पे देन इट मेक्स सेंस। ओके, चलिए, तो ये हो गया इरिगेशन। अगला वाला लिखो, कौन सा है, नंबर 5, 6 कंस्ट्रक्शन। लिखो, द टर्क्स इंट्रोड्यूस्ड न्यू टेक्निक्स, concepts, styles and materials in construction, in construction। Full stop। Now, one major change as compared to the buildings of the Rajput period में what were the majority of the buildings constructed? किस तरह की buildings होती थी? या तो टेम्पल्स होंगे या फिर किले होते थे, राइट। अब मॉस्क मतलब रिलीजियस स्ट्रक्चर्स और रॉयल स्ट्रक्चर्स तो बनेंगे ही, बट सम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज आल्सो गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड सच एज reservoirs, bridges, सराइज, रोड्स, हाईवेज एटसेट्रा, ये सब कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, राइट, एज कंपेयर टू अर्लियर। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड, so this is going to be accessible to the public. So that was one major change, and the scale of construction was much larger as compared to the previous period. Write down one major change was the prominent growth
of public infrastructure, including reservoirs, bridges, roads, and Sufi khangas, along with along with alms houses, ALMS alms houses, free kitchens, free kitchens, etc. ठीक है? Such buildings, such buildings, such buildings were much more accessible to the common public as compared to earlier. To the common public as compared to earlier. Next point. Even royal construction was undertaken to accommodate the general public. तो राजपूत पीरियड के जो किले होते थे, were all sections of the population allowed to live in them? नहीं. So generally only the upper caste, the Brahmins and Kshatriyas, the Rajputs themselves. जो वैश्यास, शूद्रास and untouchables हैं, they were kept outside the fort. तो अंदर दाखिला नहीं दिया जाता था. यहाँ पे जो टर्क्स कंस्ट्रक्शन था उसमें ऐसा नहीं था. देयर वर नो सच रिस्ट्रिक्शंस. ठीक है, तो राइट डाउन. अनलाइक द राजपूत फोर्ट्स, the forts and cities of the sultans, were open to all classes. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. द टर्क्स also introduced the arcuate style of construction. क्या होता है arcuate style of construction? It utilizes which kinds of architectural shapes? अरे नाम में ही छुपा हुआ है. Arch and dome. तो मेहराब और गुंबद समझते हो ना? ऐसा जो टेम्पल्स वगैरह हैं उसमें देखने के लिए मिलता है? नहीं मिलता है. वहां पे इधर कर्विलिनियर शिखर मिलेगा, रेक्टेंगुलर गेटवेज मिलेंगे. यहाँ पे कर्व्ड गेटवेज, डोम्ड रूफ्स मिलती हैं. राइट. तो arcuate style of construction was introduced by them, utilizing the arch and the dome. Now
फायदा क्या होता है आर्च एंड डोम यूज करने का एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल इंडियन बिल्डिंग्स? देखो, ट्रेडिशनल इंडियन बिल्डिंग्स are based upon the trabeate style of construction. Trabeate style of construction utilizes plinths and pillars for construction. तो बड़े बड़े स्टोन के पिलर्स या फिर हॉरिजॉन्टल कॉलम्स यूज करेंगे अपने स्ट्रक्चर का फाउंडेशन और सुपर स्ट्रक्चर बनाने के लिए, राइट? तो इसमें थ्योरेटिकली तो आप इन्फिनिट साइज की इमारत बना सकते हो, इन्फिनिट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्प्रेड, एक के ऊपर एक स्टैक करते जाओ, एक के बगल में एक रखते जाओ इसको, तो इट इज इन्फिनिटली रेप्लिकेबल। लेकिन प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्या होता है कि जितनी ऊंची इमारत उतना ज्यादा इसका वेट, एंड स्टोन का भी एक ना एक पर्टिकुलर कैरिंग कैपेसिटी होता है, राइट? तो आफ्टर दैट इट विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इट। तो वर्टिकली दीज बिल्डिंग्स आर लिमिटेड। आर्क्वेट स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इट यूजेस द साइंटिफिक मेथड ऑफ वेट डिस्ट्रीब्यूशन टू डिस्ट्रीब्यूट द वेट ऑफ द एंटायर आर्क। तो ये साइंटिफिक आर्च में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, दैट ओवर हियर देयर इज गोइंग टू बी अ कॉर्नर स्टोन, ठीक है? और इस कॉर्नर स्टोन की वजह से ये जो इसी तरह के स्टोन्स पूरे यहाँ पे भी लाइंड है, यहाँ पे भी लाइंड है, राइट? एंड सारा का सारा वेट इन दोनों साइड्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो ऑल्दो दिस इज नॉट गोइंग टू हैव एन इन्फिनिट हाइट, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ब्रेकिंग पॉइंट आएगा ही, बट दीज स्ट्रक्चर्स कैन बी मेड मच टॉलर एज कंपेयर टू प्रीवियस स्ट्रक्चर्स। और ऐसे में आप कर सकते हो कि इसका बेस बहुत ज्यादा ना बढ़ाना पड़े, राइट? सो इवन दोज स्ट्रक्चर्स विद अ स्मॉलर बेस कैन हैव अ लार्ज वर्टिकल एक्सटेंट। सेकेंडली, यूजिंग दीज काइंड्स ऑफ आर्चेस, आपको रूफ को सपोर्ट करने के लिए पिलर चाहिए होगा? नहीं जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अपना वेट खुद ही सपोर्ट कर रहा है। तो इंटरनल स्पेस इज गोइंग टू बी ओपन। हिंदू टेम्पल्स में देखने के लिए क्या मिलता है कि पिलर्ड मंडपास होते हैं, राइट? सो फील्ड ऑफ व्यू इज रिस्ट्रिक्टेड, पब्लिक गैदरिंग के लिए आइडियल नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे दोज कंडीशंस, दोज फ्लॉज आर ओवरकम, ठीक है? दिस इज नोन एज द आर्क्यूएट स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन। और जो ये आर्च का प्रिंसिपल है, दिस इज अ टू डायमेंशनल फिगर, इसी को अपने एक्सिस पे, सेंट्रल एक्सिस पे रोटेट कर दोगे, यू गेट दी डोम, थ्री डायमेंशनल फिगर। तो बिल्डिंग के ऊपर भी आप इसी तरह का डोम बना सकते हो, ठीक है? तो आर्च एंड डोम के बेस पे जो कंस्ट्रक्शन होता है नोन एज दी आर्क्वेट स्टाइल, दैट वाज यूज्ड बाय दी टर्क्स। क्या लिखा है अभी आपने? आर्क्वेट स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन। This brought about this brought about a notable cosmetic change, a notable cosmetic change in the skyline of cities. ठीक है? तो अब स्काईलाइन में नोटेबल चेंज क्या देखने के लिए मिलेगा? पहले किस तरह के स्ट्रक्चर्स डोमिनेट करते थे? द शिखर्स ऑफ टेम्पल्स, नाउ मीनार्स ऑफ मॉस्क्स, फोर्ट्स, मदरसाज, डोम्स एटसेट्रा, ये सब देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट राइट डाउन। द टर्क्स also introduced the lime mortar, replacing the mud mortar. मोर्टार लाइक सीमेंट इज अ बाइंडिंग मटेरियल, ठीक है? तो इसका पेस्ट बनाया जाता है, इसको लगाया जाता है, व्हेन इट ड्राइज इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर। पहले मड मोर्टार यूज किया जाता था, दैट वाज इंफीरियर टू लाइम मोर्टार। बताओ क्यों?
क्योंकि जब चूना ड्राई होता है एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो दोबारा उसको डिसॉल्व करने के लिए द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज टू बी अप्लाइड। मड में कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होता है, पानी डालोगे डिसॉल्व हो सकता है। सो इट वाज मच मोर रोबस्ट एज कंपेयर टू मड मोटर। ठीक है, तो राइट डाउन दिस न्यू बाइंडिंग मटेरियल was much more robust, was much more robust. Now, while the basic principles of the Turkish construction were rooted in Islam, तो इस्लामिक आर्किटेक्चर से ही उन्होंने बेसिक प्रिंसिपल्स को बोरो किया था। इन इंडिया किसने एग्जीक्यूट किया इन स्ट्रक्चर्स को, किसने बनाया एक्चुअली? इंडियन क्राफ्ट्समैन ने। तो उन्होंने अपने हेरिटेज से भी कुछ चीजें बोरो करके इसमें डाली हुई है, राइट। दे आर नॉट प्योर इस्लामिक स्पेसिमेंट्स, रादर दे आर कॉम्पोजिट ऑफ इंडियन एज वेल एज इस्लामिक स्टाइल, इसलिए बोलते हैं इंडो इस्लामिक स्टाइल विच इज यूनिक टू इंडिया। सो राइट डाउन while the basic tenets of Sultanate architecture are borrowed from the Islamic monuments of Arabia and Persia, from the Islamic monuments of Arabia and Persia, comma, their application in India resulted in the syncretization or synthesis of Indian and Islamic art. Okay. Now, many of the earliest Turkish monuments in India, such as the कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क मेहरौली वाला, या फिर जो 2.5 दिन का झोपड़ा है इन अजमेर, वो कन्वर्टेड इंडियन स्ट्रक्चर्स हैं। तो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क वाज कंस्ट्रक्टेड बाय डिस्ट्रॉइंग अ वैष्णवाइट टेम्पल एंड कन्वर्टिंग इट इनटू अ मॉस्क। 2.5 दिन का झोपड़ा बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री को डिस्ट्रॉय करके कन्वर्ट किया गया था। नाउ बोथ विद इन हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम आइडल वर्शिप वाज इन वोग, लेकिन इस्लाम उसको नहीं मानता है, तो यहाँ पे जो आइडोलेट्री के एलिमेंट्स थे उनको रिमूव कर दिया गया, बट बाकी जो सारे एलिमेंट्स थे, फॉर एग्जांपल जो सपोर्ट पिलर्स वगैरह हैं जिनमें नक्काशियां हुई हैं, जो जियोमेट्रिक पैटर्न्स हैं, या फिर फ्लावर्स के इमेजेस हैं, स्वास्तिकास हैं, बेल्स हैं, चेन्स हैं, ऑल दोज वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू दीज इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स। तो इस तरह से सिंथेसिस हुआ। Then later on, even in new construction, because they were relying on Indian artisans, तो Indian artisans अपने traditional techniques of beautification को यहाँ पे apply करने लग गए, ठीक है। And this was the result for this synthesis. तो ये देखा है हमने नया टेक्नोलॉजी, इसका इम्पैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हाँ, नेक्स्ट मेन पॉइंट, तो न्यू टेक्नोलॉजी आपने लिखा था ना, वैसे ही अगला वाला लिखो। apart from the introduction of new technology, comma, other factors also contributed
to economic growth, to economic growth. Subpoint, among them, the end of feudalism played a major role. Full stop. Feudalism had imposed a number of social, physical, and economic barriers and with its decline, these barriers were lowered. Full stop. The labor force, which till now had been forced to work in the fields, was suddenly free. Full stop. Many of these lower caste workers moved to the cities in search of economic activities, economic opportunities, and dignity. ठीक है. Sub point, this directly contributed to the growth of crafts production, trade, and urbanization. ठीक है. नेक्स्ट मेन पॉइंट लिखो. The Turks by destroying the power of the Rajput Brahmin alliance, also mobilized the hoarded wealth in temples and forts. Full stop. Sub point. This contributed to the growth of
manufacturing, trade, monetization, and urbanization. Trade, monetization, and urbanization. Next point. The Turkish rulers, next main point. The Turkish rulers also provided patronage and protection to traders and craftsmen. Patronage and protection to traders and craftsmen. Subpoint. The state constructed the necessary infrastructure. The state constructed the necessary infrastructure to facilitate trade, including highways and sarais, Next subpoint. The state also participated directly in the manufacturing process by maintaining workshops known as karkhanas. Full stop. All necessary items such as raw materials, tools, equipment, manpower, and funds were provided by the state. These karkhanas manufactured a large variety of goods ranging from luxury items and military equipment to utilitarian goods such as utensils, luxury items and military equipment to utilitarian goods such as utensils, tools, and cloth.
Full stop. While the royal household, military, and the court were the primary consumers, comma, surplus goods were also sold in the open market. ठीक है, तो ये हमने देख लिया है प्रोटेक्शन टू traders and craftsmen, a promotion of manufacturing as well. Next लिखो, another important next main point, another important institution which facilitated which facilitated economic growth was the ICTA. This was a regional administrative and military center. Regional administrative and military center. Full stop. As such, there was a large demand for both manufactured goods and agricultural produce. Full stop. The point. This facilitated the growth of local manufacturing and agriculture. Full stop. Next point. Surplus demand could be fulfilled only through trade. Thus, the ICTAs gradually developed as trading centers as well. समझ में आना है कि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो लोकली अवेलेबल नहीं है या फिर लोकली प्रोड्यूस नहीं करी जा रही हैं, तो वो कहां से आएंगी? बाहर से आएंगी. तो इक्ताज अब ट्रेडिंग सेंटर्स की तरह भी डेवलप होंगे. सब पॉइंट. नेक्स्ट. This led to the opening of new trade routes
and better connectivity. Which had a positive impact on the local as well as regional economy. As well as regional economy. ठीक है, so some of the more prominent इक्तास are going to emerge as regional centers. तो केवल उस इक्ता के सेंटर नहीं, सराउंडिंग इक्तास का भी वही सेंटर इमर्ज होकर बन जाएगा. Some of these iktas they are going to develop from administrative and military centers into small towns or small cities, right? Next point, the most prominent regional centers, next point, the most prominent regional centers were connected via busier trade routes. Thus leading to their development as large cities. ठीक है, some of these ICTA centers are going to emerge as large cities. बड़े शहर बन जाएंगे, right? हाँ, their development as large cities, leading to their development as large cities. Next main point लिखो, economic growth was given a boost due to the political unification introduced by the Turks. Subpoint, the fragmented polity and frequent warfare of the preceding period and constant warfare of the fragmented polity and frequent warfare of the preceding period was detrimental to trade and manufacturing. Full stop. Next subpoint, the Turks had unified the whole of North India thus removing internal divisions, conflicts and barriers. Full stop. Next subpoint, the atmosphere of political stability
political stability, the atmosphere of political stability, coupled with the proactive encouragement of trade contributed to the rapid growth of urbanization. ठीक है, ये हो गया effect of political unification. Next main point लिखो, the introduction of monetary unification had a similar effect on trade, manufacturing and urbanization. Similar effect on trade, manufacturing and urbanization. Full stop. Write down sub point. With the introduction of a uniform coinage system, monetary exchange became much more simple and efficient. ठीक है, and lastly next main point लिखो, the establishment of Turkish rule also connected India to the Islamic world at a deeper level. Full stop. Sub point. Also connected India to the Islamic world at a deeper level. Sub point लिखो, due to this external trade was revived and soon became highly favorable in India's favor. Full stop. Next sub point. Favorable trade also had a positive impact on manufacturing and urbanization. ठीक है, take down a question.
discuss the impact of new technology introduced by the Turks on the Indian economy. I think ऐसे similar question GS paper 1 में भी आया है इस बार, right? Another question, the establishment of the Delhi Sultanate created a profound economic impact. Comment. दोनों क्वेश्चन एक बार पढ़ लो. लेट मी नो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स. समझ में आ रहा है कैसे अप्रोच करना है, क्या क्या कंटेंट इंक्लूड करना है. वो जो 5-6 बताए थे ना शुरुआत में पहले वाले स्लाइड में, वो वाला सब. दैट इज व्हाट यू नीड टू डिसाइड ना कि क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे लिखना है. अब आपको देखो क्वेश्चन किसके बारे में है, डिस्कस दी इम्पैक्ट ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी. तो आप अगर टेक्नोलॉजी को डिस्क्राइब करने में ज्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे तो इम्पैक्ट को डिस्कस करने के लिए कम टाइम बचेगा. तो इट इज बेस्ट कि आप जो भी जिन जिन एरियाज में नए टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स हुए हैं उनको एक पैराग्राफ में कवर कर दो एंड देन आफ्टर दैट यू स्पेंड द रेस्ट ऑफ द स्पेस इन डिस्कसिंग द इम्पैक्ट ऑफ दीज चेंजेस. ठीक है, किस तरह से डेमोग्राफी को चेंज किया, जो इकोनॉमिक पैटर्न है उसको चेंज किया, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज किया, अर्बनाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ, उस वजह से कई सारे इकोनॉमिक चेंजेस आए, कॉम्पोजिशन ऑफ द इकोनॉमी चेंज हुआ, उसके ऊपर ज्यादा आपको फोकस करना है. ठीक है, रादर देन द न्यू टेक्नोलॉजीज दैट वर इंट्रोड्यूस्ड. दूसरा वाला, हाँ, गन पाउडर आप बोल सकते हो कि इन एसोसिएशन विद पेपर मैन्युफैक्चरिंग, कम से कम उसने वो तो किया होगा ना कि कुछ ऐसे मान लो सर्कस परफॉर्मर्स हो गए, उनकी तादाद बढ़ गई होगी, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा होगा, पेपर मैन्युफैक्चरर्स को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा होगा क्योंकि गन वो पटाखे बनाने में, फायर क्रैकर्स बनाने में, अदर रॉकेट्स वगैरह बनाने में उनका यूज होता है, राइट. तो ये सारी चीजें आप बोल सकते हो. दूसरा वाला, इसमें सब कुछ लिखोगे आप. ठीक है, तो दिल्ली सुल्तान्स ने और उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसने किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ को फैसिलिटेट किया. विद द दिल्ली सल्तनत आल्सो केम अ लॉट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, राइट. उसको उसका भी आप इम्पैक्ट यहाँ पे इंक्लूड करोगे. वंस अगेन जो आपने पहले क्वेश्चन में किया है ना, उसी को सल्तनत कॉन्टेक्स्ट में लिख करके दोबारा से एनालाइज करना है. ठीक है, आगे बढ़े.
Lastly, we need to see the socio-cultural consequences. Socio-cultural consequences. तो बताओ, विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टर्किश रूल, सोसाइटी में क्या क्या मेजर चेंजेस आए, कल्चर में क्या क्या मेजर चेंजेस आए? ठीक है, सबसे पहले तो एडवेंट ऑफ इस्लाम इन अ मेजर वे took place, was facilitated. अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इस्लाम के साथ और कुछ आएगा? इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक लर्निंग, इस्लामिक आर्ट, ये सारी चीजें भी आएंगी। इस्लामिक फेस्टिवल्स, इस्लामिक बिलीव्स, प्रैक्टिसेस, इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग आएंगे, नए लैंग्वेजेस आएंगे, राइट? अच्छा, the advent of Islam is also going to create a reaction from the indigenous people. इनिशियली किस तरह का रिएक्शन था? इनिशियली ओपन आर्म्स के साथ एक्सेप्ट किया या फिर आइसोलेशन बनाए रखना चाहा, हॉस्टाइल रिलेशनशिप था? हॉस्टाइल रिलेशनशिप था। अल-बरूनी पहले ही बता चुका है हमें that the painful memory of Islamic invasions under Mahmud of Ghazni had created a bitter taste in the minds of Indians. They were hostile towards the Muslims. They viewed them as outsiders. The Muslims were viewed as impure. मलेच बोलते थे. Contact with them was avoided. The Islamic rulers and the early Islamic residents who came with these rulers, जो soldiers वगैरह थे, they had a similar attitude towards the Indians, क्योंकि जब शुरुआत में आए थे they were very fanatic, right? So they had come with the idea of religious victory, and क्योंकि इंडिया अभी भी एक हिंदू majority देश था, that feeling continued to persist. तो दोनों साइड से ही hostile attitude. Did this hostile attitude last? नहीं, धीरे धीरे bridges were constructed, bridging the two great civilizations. Cultural bridges create हुए, cultural assimilation हुआ, syncretic culture का development हुआ, and this we see in various fields. जैसे हमने architecture में देखा है कि जो Indian elements of art हैं, they were incorporated into the Islamic elements of art. इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इमर्ज हुआ. लैंग्वेज में यही हुआ, अरबी, फारसी, टर्की के वर्ड्स अब लोकल लैंग्वेजेस में असिमिलेट होने लग गए, लीडिंग टू द इमर्जेंस ऑफ न्यू लैंग्वेजेस सच एज हिंदवी और उर्दू और हिंदुस्तानी रेखता, अलग अलग नाम से बोला जाता है. उसके कई सारे रीजनल वेरिएशंस हुए. भक्ति और सूफी मूवमेंट का बहुत मेजर रोल रहा ये पूरा असिमिलेशन, कल्चरल असिमिलेशन फैसिलिटेट करवाने में, बिकॉज बोथ ऑफ देम represented liberal trends, liberal streams, right? Now the advent of Islam, or as Islam came to India, it was very attractive to a particular section of the local population. बताओ किसके लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होगा? जो अभी एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम में सबसे ज्यादा दुखी हों, सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड फील कर रहे हो, कौन से ग्रुप? लोअर कास्ट ग्रुप्स. क्यों दुखी थे? They were facing social exclusion, ostracization in everyday life. They were not given access to education. Economic participation was restricted. Even their physical movement was restricted. Their ability to access public goods such as wells, orchards, ये सब भी possible नहीं था. Same road पे नहीं चल सकते थे. Islam, at least theoretically, was egalitarian. जाति के बेसिस पर भेदभाव नहीं था. That is why
These people felt that if we convert to Islam, we would be rid of this stigma. ठीक है. Second thing that happened was that Islam में कास्ट के बेसिस पर कोई ऑक्यूपेशन में रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगते थे, राइट. तो एवरीबडी वाज फ्री टू परस्यू एनी ऑक्यूपेशन दैट दे वांटेड, एंड मोस्ट ऑफ दीज लोअर कास्ट पीपल, दे टिल द राजपूत पीरियड वर बीइंग फोर्स्ड टू वर्क इन द फील्ड्स, क्योंकि फ्यूडलिज्म का जमाना था, ट्रेड कॉमर्स वैसे भी नहीं हो रहा था, मैन्युफैक्चरिंग नहीं चल रहा था. नाउ if they wanted to leave behind their life of social indignity, social stigma, poverty, they would convert to Islam and migrate to the cities. Over there they could find work as a craftsman or even get engaged in trade. Okay, so the advent of Islam also had a direct connection with the growth of urbanization. और अर्बनाइजेशन में इस्लाम का क्या रोल है, वो जो फ्रीडम चाहिए अर्बन सोसाइटी को डेवलप होने के लिए, दैट इस्लाम प्रोवाइडेड बाय वीकनिंग द होल्ड ऑफ फ्यूडल टेंडेंसीज दैट वर ग्रिपिंग द इंडियन सोसाइटी टिल देन. ये चेंज आना अब शुरू होगा. ठीक है. देन कई सारे अलग अलग डेवलपमेंट्स होंगे इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर. फॉर एग्जांपल, आमिर खुसरो is going to create an entire body of literature, Urdu literature, right? So Urdu literature is going to be popularized. Music में कई सारे instruments introduce किए जाएंगे, कई सारे styles introduce किए जाएंगे, गजल, कव्वाली, etc. that is going to be introduced, right? New variety of literature is going to be introduced. सूफी खानगा से, सूफी सेंट से एसोसिएटेड लिटरेचर है, उनकी टीचिंग्स को रिकॉर्ड करता है, नोन एज मालफुजात लिटरेचर, that is going to be introduced. As the Sufis and the Turkish courts, जो regional courts है इक्तास, they are going to be established in different regions. Regional languages का भी development होना अब शुरू हो जाएगा in association with Islam. Regional जो traditional literature है, that is also going to get incorporated within the Islamic culture as it is transmitted and translated and then transmitted in a further region, right? तो मान लो कोई कश्मीर का एक वर्क था, दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसलेटेड, बंगाल का कोई पुराना वर्क था, दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसलेटेड. तो विद दिस कल्चरल असिमिलेशन एट अ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लेवल इज गोइंग टू टेक प्लेस, राइट. ये होगा. देन सम न्यू लिटरेरी ट्रेडिशंस आर आल्सो गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड. एक फील्ड ऑफ स्टडी जो इंडिया में इसके पहले अंडर डेवलप्ड था, अनसिस्टमैटिक था, दैट इज गोइंग टू बी सिस्टमेटाइज्ड. कौन सा सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम? वेरी प्रोमिनेंट ह्यूमन साइंस. हम उसी के क्लास में बैठे हुए हैं इस समय. हिस्ट्री राइटिंग, हिस्टोरियोग्राफी, राइट. तो हिस्टोरियोग्राफी इज गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू इंडिया इन अ फॉर्मल मैनर. तो ये सारे सोशल एंड कल्चरल चेंजेस अब होने शुरू होंगे. क्लियर है? लिख लें इसको, राइट डाउन. सोशो कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस लिखो. The establishment of Turkish rule, the establishment of Turkish rule was accompanied by the advent of Islam and Islamic culture. Sub point. Initially, the natives reacted to it with hostility. Sub point. This was partly due to the fanatical and violent attitude
of early invaders who relied on religious massacres, forcible conversions, and destruction of religious centers. Destruction of religious centers to promote Islam. A point. Next a point. It was also partly due to the isolationist and insular attitude of the Indian society at that time. Next point. All outsiders were considered impure and called by the term Malaysia. ठीक है, तो इन दोनों वजह से इनिशियली देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ हॉस्टिलिटी. नेक्स्ट मेन पॉइंट लिखो. ग्रेजुअली the two cultures began assimilating with each other. Leading to the emergence of a unique Indo-Islamic culture. Full stop. Subpoint. While the society remained horizontally divided between Hindus and Muslims, the two communities definitely learnt how to tolerate and live with each other. Definitely learnt how to tolerate and live with each other. Full stop. Next point. In this, the medieval Bhakti and Sufi movements
based on the concepts of religious tolerance, mutual respect, and peaceful coexistence, played the most important role. ठीक है? Next main point. The arrival of Islam also brought about a shift in caste and class relations. The point. Compared to the rigid and discriminatory caste system, Islam appeared to be comparatively egalitarian. Full stop. Next subpoint. Thus, it was very attractive to the lower castes who desperately wanted freedom from their enforced poverty, exclusion, and indignity. Full stop. Thus, they converted to Islam on a large scale. Full stop. Next point. The establishment of Turkish rule had also weakened feudalism and created new economic opportunities. Full stop. With this, the freed agrarian labor eagerly migrated to the cities
eagerly migrated to the cities and added to the growing ranks of artisans, craftsmen and traders. Okay? Now, while some of them converted to Islam, even among the lower castes, most of them in fact did not convert. Okay? So they migrated to the cities, but they did not convert. And those who did not convert, since they were entering new professions, so within the caste system, they are going to be given a new identity. This also is going to lead to the proliferation of castes. Write down subpoint. This contributed to the process of proliferation of castes. ठीक है. Now, ये proliferation of caste जो है, this is also going to be visible in the rural landscape. अब रूरल लैंडस्केप में फ्यूडल सोसाइटी था इसके पहले, तो वहां पे तो सोशल स्टैग्नेशन था, तो बहुत ज्यादा सोशल रिफॉर्मुलेशन नहीं हो रहा था, तो नई कास्ट का इमर्जेंस शुरुआत में हुआ, उसके बाद रुक गया. अब क्या हो रहा है, दोबारा चेंज आ रहा है. क्या क्या चेंज आ रहा है, देखो, पहले तो सिटीज आर गोइंग टू डेवलप एज प्रोडक्शन एंड क्राफ्ट सेंटर्स, फिर उसके बाद इकताज, और फिर उसके बाद जो इकताज में भी पेरिफेरल सेटलमेंट्स हैं वहां पे भी क्राफ्ट्स, प्रोडक्शन, ट्रेड एटसेट्रा शुरू हो जाएगा. तो सम लोकल कास्ट आर गोइंग टू इमर्ज आउट ऑफ द प्रैक्टिशनर्स ऑफ दीज क्राफ्ट्स एंड प्रोफेशंस. ठीक. सेकंड चेंज क्या होगा, अब पेपर बहुत ज्यादा मिल गया है, स्टैंडर्डाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन आ गया है, तो अब कई सारे रिकॉर्ड कीपर्स की जरूरत पड़ेगी. ठीक है. तो रिकॉर्ड कीपर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सल्तनत आर गोइंग टू बी ascribed a separate caste. ठीक है. So this caste proliferation began in the cities and gradually filtered down to the villages. Clear? Write down. हाँ, नेक्स्ट सब पॉइंट ही लिख लो. अभी कास्ट एंड क्लास रिलेशन से देख रहे हैं ना हम, तो लिखो the process of caste proliferation eventually emerged even in the villages with the emergence of new crafts and the growing demand for administrators, officials, surveyors, administratives, officials, surveyors, traveling salesmen, performers, scribes and accountants. ठीक है, इतना क्लियर है ना. So these are going to be the changes brought about by the establishment of Turkish rule in the caste and class relations, both in the urban as well as the rural environment. Next main point लिखो.
The introduction of Turkish rule, the introduction of Turkish rule brought about a profound change in literary development, in literary and linguistic development, in literary and linguistic development. Full stop. West Asian languages, West Asian languages such as Persian, Arabic and Turkish were introduced in India. Persian, Arabic and Turkish were introduced in India. With इनमें से कौन सा वाला कोर्ट लैंग्वेज था? दरबार का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा था? नहीं, फारसी. ठीक है. विद पर्शियन बीइंग द कोर्ट लैंग्वेज, और ये जो एजुकेशन के लिए प्राइमरी लैंग्वेज कौन सा था? रिलीजियस एजुकेशन के लिए, लॉ के लिए अरबी. ठीक है. एंड अरबिक बीइंग द प्राइमरी रिलीजियस लैंग्वेज, प्राइमरी रिलीजियस लैंग्वेज. सब पॉइंट लिखो. gradually these languages interacted with local dialects around Delhi giving birth to, अरे जब इंडियन लैंग्वेज में, इंडियन दिल्ली के आसपास की लैंग्वेज में अरबी और फारसी वर्ड्स घुस गए तो उस लैंग्वेज को क्या बोला गया? नई लैंग्वेज को हिंदी और उर्दू और रेखता और हिंदुस्तानी या फिर हिंदवी. गिविंग बर्थ टू हिंदी स्लैश उर्दू स्लैश रेखता स्लैश हिंदवी स्लैश हिंदुस्तानी एक्सेट्रा. अलग अलग होती थी लेकिन स्टैंडर्डाइज्ड अगर तरह से देख रहे हो इंडिया में तो पर्शियन स्क्रिप्ट वाज इन ऑल ऑफ देम. ठीक है. सब पॉइंट. एज उर्दू स्प्रेड टू अदर रीजन्स, क्या होगा? सेम रहेगा या फिर अपने अपने अलग अलग रीजनल वेरिएशन से मर्ज होंगे? अलग अलग रीजनल वेरिएशन से मर्ज होंगे. एज उर्दू स्प्रेड टू डिफरेंट रीजन्स, regional variations began emerging. ठीक है. नेक्स्ट मेन पॉइंट लिखो. The introduction of Turkish rule, also led to the emergence of new categories of literature. These include
तवारीख, मालफुजात, दीवान, मसनवीज, खमसाज, एटसेट्रा। तवारीख क्या होता है? क्या होता है ये? डेट नहीं, historical chronicles, factual chronological account of the activities of the lifetime of any ruler। ठीक है, जैसे तवारीख हिंद हो गया, तारीख नसीर शाही हो गया, तारीख फिरोज शाही हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, राइट डाउन। तवारीख, historical chronicles, historical chronicles generally by a court historian, generally by a court historian under royal patronage, under royal patronage। ठीक है, एग्जाम्पल दे सकते हो और एग्जाम्पल लिख लो। तारीख फिरोज शाही, दूसरा एग्जाम्पल लिख लो। तभी तारीख नासिरी, तारीख नासिरी, एटसेट्रा। ठीक है, दूसरा हो गया मालफुजात टेक्स्ट और मालफूज लिटरेचर। क्या होता है ये? दीज आर सूफी लिटरेचर। ठीक है, सूफी टेक्स्ट होते हैं। नाउ द सूफी सेंट्स मेक अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, होल्ड अ नंबर ऑफ डिस्कशंस, कई सारे सरमन्स देते हैं, प्रवचन देते हैं। And their disciples, after they have already delivered these sermons, said all these things, done all these actions, from memory they write them down और उसको poetic form में लिखते हैं। ठीक है, तो write down these are, हाँ, Sufi texts, Sufi texts containing the teachings of prominent saints, containing the teachings of prominent saints written by their disciples in poetic form, in poetic form, of prominent saints written by their disciples in poetic form। Next, दीवान, क्या होते हैं? These are collection of short poems, collection of short poems। जनरली क्या थीम होता है शॉर्ट पोएम्स? लव थीम होता है जनरली, लव पोएम्स। मसनवी, this is a long poem consisting of rhyming couplets, long poem consisting of rhyming couplets।
राइमिंग कपलेट्स, तो दोहों से बने हुए लंबी पोयम होती है ये, ठीक है। एंड जनरली यहाँ पे थीम क्या होता है, इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ यूलॉजी, ठीक है। तो किसी की प्रशंसा में लिखा जाता है ये, किसी पर्सनालिटी की प्रशंसा में, जनरली इन द फॉर्म ऑफ अ यूलॉजी। और खमसा, यूलॉजी, जनरली इन द फॉर्म ऑफ अ यूलॉजी। लास्टली खमसा, खमसा क्या होता है भाई, खमसा इज अ क्विंटेट, क्विंटेट मतलब 5 का कलेक्शन। सो खमसा रिफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ 5 मसनवीज, लिखो, अ कलेक्शन ऑफ 5 मसनवीज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द टर्क्स, हाँ नेक्स्ट मेन पॉइंट, लिटरेचर के अलग अलग जॉनर्स देख लिया हमने। नेक्स्ट मेन पॉइंट, द टर्क्स also contributed to the growth of music by introducing new instruments such as the rabab, sarangi and tabla। तो रबाब और सारंगी तो सेंट्रल एशियन इंस्ट्रूमेंट्स थे, वहां से लेकर के आए। तबला वाज इन्वेंटेड इन इंडिया बाय आमिर खुसरो ओनली, ठीक है, इन्वेंटेड बाय आमिर खुसरो। राइट डाउन, the कव्वाली फॉर्म ऑफ म्यूजिक, सब पॉइंट लिख सकते हो, कव्वाली फॉर्म ऑफ म्यूजिक and devotional songs known as ghazals were introduced by the Sufis। Next point, next sub point, the Turks also contributed to the development of Hindustani style of music। हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूजिक में कितने घरानास होते हैं, कितने सब स्टाइल्स होते हैं, 6 घराने, ठीक है। उनमें से 2 को ऐसा माना जाता है कि आमिर खुसरो ने स्टार्ट किया, ख्याल और तराना। तो राइट डाउन, इनफैक्ट आमिर खुसरो is considered to be one of the founders of the Khyal and Tarana substyles, of the Khyal, Khyal, and Tarana substyles। घराना, ठीक है। Then with the coming of the Turks,
फैशन में कई सारे चेंजेस आए, आर्किटेक्चर में कई सारे चेंजेस आए, क्विजीन में बहुत सारे चेंजेस आए, न्यू फेस्टिवल्स वर इंट्रोड्यूस, न्यू रिलीजियस प्रैक्टिसेस वर इंट्रोड्यूस्ड, डाइट में कई चेंजेस आए, राइट. दे आल्सो असिमिलेटेड विद द इंडियन कस्टम्स, एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन, डाइट, फैशन एटसेट्रा, और दोनों का भी सिंथेसिस हुआ. दिस यू कैन राइट ऑन योर, राइट. सो दिस इज द सोशो कल्चरल इम्पैक्ट ब्रॉडली स्पीकिंग. टेक डाउन अ क्वेश्चन. Throw light, throw light on the social and cultural impact of the establishment of Turkish rule in India. Establishment of Turkish rule, social and cultural impact of the establishment of Turkish rule in India. टू 200 words. हो जाएगा ये? ठीक. So we have covered the consequences of the establishment of Turkish rule. आज हमने इकोनॉमिक और सोशो कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस कवर कर लिए हैं. कोई डाउट्स हैं तो प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज आई. कनिष्क, कोई डाउट्स हैं? नहीं, चलिए.